Stop scrolling videos for 30 seconds because the next thing you're about to watch is decided by your phone or your laptop that knows you better than you know yourself. Ever noticed how Instagram reads your mind or how your phone unlocks with your face? Yeah, that cannot be done by basic AI or traditional machine learning. That's something very deep, which is called as deep learning. It is a technology that learns on its own and it works on its own, no human intervention needed much, and is quietly running the world behind the screen. You know what? It's even learning right now from you when you're using your phone and watching this video. So let's dive in to learn deep learning. So basically, AI is a huge field which has got a lot of branches like computer vision, expert system, machine learning, robotics, NLP. And for now, let's focus on machine learning. So inside AI, we have a subset called machine learning, and inside machine learning, that sits deep learning. So yeah, deep learning is a subset of machine learning, which in turn is a subset of artificial intelligence. So, what is AI? It's a technology through which we make our systems or machines intelligent enough so that they can learn and mimic human behavior. And what is ML? It is a part of AI through which we make our systems or machine learn something. Now, inside machine learning, we have deep learning. So, deep learning is a technology that uses artificial neural network with many layers that are deep enough to learn complex things. So basically, deep learning के through we can make our systems or a machine learn things that normal machine learning algorithms, statistical machine learning algorithm cannot do. ओके बिकॉज डीप लर्निंग के थ्रू कॉम्प्लेक्स फीचर्स को भी एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है. तो जो चीज़ें हम नॉर्मल जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो हमने सारी पिछली वीडियो में पढ़े हुए थे, वो अगर उन सारे एल्गोरिथम से जो काम नहीं हो रहा है, दैट्स वेयर डीप लर्निंग कम्स. डीप लर्निंग से हम वो काम भी कर सकते हैं. ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क जो है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क? सो इट्स अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम बायोलॉजी, राइट. ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क होता है, राइट. So what is neural network? It is a network of a lot of interconnected neurons actually. Right. Now, what is the purpose of these interconnected neurons? Like vision, hearing, to coordinate movements, to do problem solving, lots of tasks. So, what if there is no neural network? You can imagine there will be a total damage in the human body, right? Human can get paralyzed, they can go mad, it can even cause death, you know. So that's the importance of neural network in a human. Deep learning mein we are completely inspired from the neural network in a human brain, and उसी concept को use कर कर we are trying to make our machines as much intelligent as humans. Okay, so here we are going to use artificial neural networks to learn things deeply. And as I said कि जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में सारे algorithms देखे थे, सारे concepts देखे थे, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, that was all traditional machine learning known as statistical machine learning. Okay, so yeah, that's the term. So there are a lot of complex tasks that normal statistical machine learning cannot accomplish. वहाँ पर we need deep learning. Okay, so let's understand कि statistical machine learning कब यूज़ करते हैं and deep learning कब यूज़ करते हैं. So statistical machine learning हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास जो भी ट्रेनिंग डेटा आ रहा है, इफ़ दैट ट्रेनिंग डेटा इज़ structural training data. Okay, so if the training data that we are receiving is structural training data, that means if it is in a tabular format or something like that, that means if it is completely structured, in that case we use statistical machine learning. But जब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी टेक्स्ट, it could be images, audios, videos, anything. Okay, so in those cases we use deep learning.
बिकॉज ऑब्वियसली इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, यू कैन इमेजिन दैट इमेजेस में सिर्फ एक कोई डायमेंशन नहीं होता, दो डायमेंशन नहीं होते, देर आर सो मेनी डायमेंशन, देर आर सो मेनी थिंग्स. इन दैट केस स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग डजंट वर्क. So where there we have to use deep learning. All right. Also, in statistical machine learning, we use algorithms, right? We use algorithms to deal with everything. But in deep learning, we have, just like how we had algorithms in the statistical machine learning, here in deep learning we have neural networks. Okay, so neural networks is the main thing in the deep learning. So just like how we had in statistical machine learning, we had linear regression, we had clustering, so many algorithms, right? So just like that, here we have lots of neural networks, like there is convolutional neural network, and there is transformers. Transformer is a very famous example, I guess, because this is the technology that we are using in ChatGPT, Gemini, and all of these. All right. So yeah, next point which you should note is, it is statistical machine learning is used to deal with simple features. Okay, like here, as I said, right, like we are getting data in tabular format, so these are simple features, right, where you are receiving data structured and everything is simple to learn, right? But when we have complex features, in that case, deep learning. All right, we have to use deep learning in that case. Next point, yeah, in statistical machine learning, the training data that we have to provide to the machine could be small. It will work great with that. But in deep learning, you have to provide huge amount of training data for the machine to learn things. Okay, people do prefer statistical machine learning sometimes over deep learning on the basis of interpretability. So sometimes we need to know how the output has came, right, how it has been interpreted by machine, we need to know. All right, so in that case, where we need the interpretation that yeah, this is how the output has been generated, in that case we need statistical machine learning. But yeah, if interpretability is not required, then you can go for deep learning, so whatever the requirement is. So yeah, there is no as such some hard and fast rule when to use statistical machine learning or when to use deep learning. It simply depends on what you need, your requirements. All right, here we can take example of face unlock in your phone, right? So we'll take two examples. First, let's say this example where we are unlocking our phone with our face, right? So in that case, which technology would you prefer, deep learning or statistical machine learning, which one? So for face unlock, deep learning is way better than statistical machine learning. Deep learning plays the most important role to actually recognize the face. Okay, so for example, if we had to make a simple emotion detector, like whether the person is sad or happy or upset, in that case we can use statistical machine learning, because wahan par we had structural data, right, that yeah, the person is happy, the person is sad, right? We know how the patterns will be exactly, we know the structure, right? So in that case we can use statistical machine learning. So emotion detector, simple emotion detector ke liye statistical machine learning was sufficient enough, but for face unlock, statistical machine learning cannot really work. So that's where we need deep learning, because you know, like फेस में क्या होता है, आईज, नोज, लिप्स, ये फीचर्स एवरी ह्यूमन बीइंग में होते हैं, राइट? सो हाउ डू वी एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज दैट या दिस इज द पर्सन? सो उसके लिए डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे. सो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या करता है, वो चीज़ों को बहुत डीप में स्टडी करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, लॉट ऑफ कैलकुलेशन विल बी परफॉर्म टू अंडरस्टैंड हु द पर्सन इज. Okay, so that is the reason why we use deep learning for the face unlock feature in our phone. Next example you can take here as, we have, let's say, apple and orange. Now if we have to make a machine learn how apple and orange looks, so that later it can identify whether the given fruit is apple or orange, right? So to identify the fruit, we will give the images of apple and oranges, a lot of apples and a lot of oranges. So what statistical machine learning will do,
it will simply like work on structural data. Like it will see the size of the fruit, it will see the color of the fruit or the shape of the fruit, right? Like, yeah, the apple is having this size, color is red, shape is of this, right? And orange is having whatever size, and then color is orange, and then shape is almost circle. So it is working on a structural data, right? So in this case mein, we can use statistical machine learning. But yeah, that's how it will work. It will like use a certain features to identify which fruit it is. But in some cases where let's say apple का shape थोड़ा सा different है, वो exactly ऐसा नहीं है, थोड़ा सा different है, या color थोड़ा सा faded है, like it's a bit yellowish or it's a bit greenish, so वहाँ पर your machine learning algorithm may get confused, right? कि वो apple है या orange है, right? Similarly, same can happen with orange. उसका size, उसका color, shape थोड़ा सा different हो सकता है, right? So that's when deep learning shines. All right. When statistical machine learning fails, deep learning shines. So how deep learning works? It will actually use a lot of images of apple and of orange. Okay. And it will learn things in detail. Okay. In depth. So that it can identify which fruit it is, no matter how whether the fruit looks exactly same as how it should be, or if it is different from how it should be. Okay. So yeah, statistical machine learning simply work करता है कुछ structural data को लेकर, but deep learning will work on a unstructured data and it will go in detail so that it can give you the correct output, okay, at the end. So yeah, that's how it's different from statistical machine learning. So let's see how deep learning works. So as we know, deep learning का जो main working है, that is completely on neural network, right? Deep learning is all about neural networks. Deep learning में हम मॉडल्स को कैसे लर्न कराते हैं? थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स. जैसे स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग में we were using algorithm, here neural network, right? So this is how a neural network looks. Okay, so here you can think of each circle as neurons. Okay, each circle over here represents a neuron, and all the lines that you see here, all the lines represents connections between each neuron. Okay, so here this particular first layer, this first layer is called as input layer. Okay, the first layer is called as input layer. The last layer is called as output layer. Okay, and all the other layers that come in the middle, all of these layers are called as hidden layers. Okay, now in this diagram we have only two hidden layers, but in reality in a neural network there are tons of hidden layers. Okay, अभी यहाँ पर चीज़ों को easily समझने के लिए we have used only two hidden layers, but yeah, keep this in mind कि actual में tons of hidden layers होती है neural network में. Okay, so yeah, that's the basic structure or of how a neural network looks. I hope that's clear. Now input layer का काम क्या होता है? Input layer का काम obviously to take inputs, right? Now output layer का काम obviously to predict the output, right? To predict the output. And hidden layer का काम क्या होता है? To perform a lot of computations on the input data to produce the output data. Okay, so input layer simply input लेगा और hidden layer उस input के ऊपर a lot of computation perform करके output layer को send करेगा, तो हमें output layer से output predict होकर मिल जाएगा. Okay, so that's the basic working. Let's understand how does a neural network gets trained, right? Now, to train a neural network, we have to perform two major steps. The first step is called as forward propagation, and second step is known as backward propagation. Each circle represents a neuron, right? So in hidden layers, all the neurons will have a constant value called as bias. Okay, so let's say this neuron has a bias value
called B. Okay, here this neuron has a bias value B, and this particular neuron is getting inputs from 3 other neurons. As you can see, right, it's getting inputs from 3 other neurons. X1, this input is X2, this input is X3. Also, all the connections between the neurons will have certain weight, right? So the weight of the first connection is, let's say, W1, weight of the second connection is, let's say, W2, and weight of the third connection is, let's say, W3. Let's see how the forward propagation works first. In the forward propagation, what happens? Each of the neuron in the first hidden layer will get input from the input layer. Okay, so here the flow of data is in the forward direction, right? It's moving in this direction. That's why it's called forward propagation. Okay, so input has been received by the neurons in the hidden layer. अभी hidden layer क्या करेगा? Computation perform करेगा, obviously, right? Now यहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे एक बेसिक कंपटीशन परफॉर्म करते हैं अपने लेवल पे. सो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उस बेसिक कंपटीशन का, दैट फर्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट वेटेड सम. ओके, हाउ डज द वेटेड सम गेट्स कैलकुलेटेड? सो वेटेड सम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है. यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ these two, okay, input with connection. So weighted sum will be equal to x1 into w1 plus, it's sum, right? So plus x2 into w2 plus x3 into w3, and this whole thing will be then added to the bias value, and that's the formula for weighted sum. ओके अभी यहाँ पर जो भी वेटेड सम कैलकुलेट होगा, जो भी इसका फाइनल आउटपुट आएगा यहाँ पर, दैट आउटपुट विल बी पास्ड टू अ स्पेशल फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन. ओके, अभी हमने इस पूरे को पास कर दिया एक स्पेशल फंक्शन को विच इज़ नोन एज एक्टिवेशन फंक्शन. ओके, हमारे पास बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं. लाइक वी हैव सिग्मॉइड फंक्शन. ओके, वी कैन यूज सिग्मॉइड, और देर इज़ वन मोर कॉल्ड ReLU विच इज़ नथिंग बट रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट. ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है. ये सब हम डिटेल में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ या जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जिसमें से जो भी सूटेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस एक्टिवेशन फंक्शन को हम यूज़ करेंगे. ओके, नाउ एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? जो भी उसका कंपटीशन है वो परफॉर्म करेगा, एंड कंपटीशन परफॉर्म करने के बाद इट विल गिव अ सर्टेन वैल्यू, एंड दिस फाइनल वैल्यू विल बी देन पास्ड ऑन टू द next neuron in the forward direction. ओके, सो हमने वेटेज सम कैलकुलेट करके एक्टिवेशन फंक्शन को पास किया. एक्टिवेशन फंक्शन अपने कंप्यूटेशन परफॉर्म करके एक पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट करेगा. उस वैल्यू को हम आगे पास कर देंगे टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. ओके, नाउ सेम थिंग विल बी डन बाय द नेक्स्ट न्यूरॉन. वो भी अपने लेवल पे यही सारे कॉम्पिटिशन्स परफॉर्म करेगा, वेटेज सम कैलकुलेट करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन को पास करेगा. सो जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी वो पास कर देगा नेक्स्ट लेयर को विच इज़ द आउटपुट लेयर. ओके, सो आउटपुट लेयर लास्ट में आपको एक प्रेडिक्शन जनरेट करके देगा. ऑल राइट,
सो या दैट्स हाउ फॉरवर्ड प्रोपगेशन वर्क्स. सो बेसिकली हम इनपुट लेयर से हमें इनपुट लेयर से इनपुट पास करना है टू द हिडन लेयर्स उसके ऊपर कुछ कॉम्पिटिशन परफॉर्म करते हैं, वेटेज हम कैलकुलेट करके देन एक्टिवेशन फंक्शन को पास करके सारे कॉम्पिटिशन परफॉर्म करके वो आउटपुट पास कर देगा. प्रेडिक्शन लेयर आपको फाइनल आउटपुट प्रिडिक्ट कर दे देगा. दैट्स हाउ फॉरवर्ड प्रोपगेशन वर्क्स इन द forward direction. Input pass to hidden layers then output layer. Okay, now अभी लास्ट में जो भी प्रिडिक्शन यहाँ पर हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पर फाइनल आउटपुट जो भी इसने प्रिडिक्ट किया है, अगर वो I don't know for some reason recording stopped. Anyways, let's continue. सो यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन जनरेट हुआ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के थ्रू, हम अब उसे चेक करेंगे कि वेदर दैट प्रिडिक्शन दैट आउटपुट इज़ करेक्ट और नॉट. अभी हम कैसे चेक करेंगे? ऑब्वियसली वी आर ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क, तो हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा आया था, राइट? तो वो जो ट्रेनिंग डेटा था उसमें ऑब्वियसली एक्चुअल आउटपुट क्या आना चाहिए वो भी दिया हुआ होगा, राइट? तो हम यहाँ पर बैकवर्ड प्रोपोगेशन परफॉर्म करके हम चेक करेंगे कि ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये करेक्ट है या रॉन्ग है. सो अगर ये एग्जैक्टली सेम है प्रिडिक्टेड आउटपुट, अगर एग्जैक्टली सेम है एक्चुअल आउटपुट के, दैट मीन्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. बट अगर वो सेम नहीं है, प्रिडिक्टेड आउटपुट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट जो कि ट्रेनिंग डेटा में दिया हुआ है, तो अब रॉन्ग है इसका मतलब, राइट? प्रिडिक्टेड आउटपुट रॉन्ग है ना. रॉन्ग तो है, बट हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो कितना रॉन्ग है, हाउ मच रॉन्ग इज द प्रिडिक्टेड आउटपुट. ओके, बेसिकली हम यहाँ पर क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिडिक्टेड आउटपुट कितना रॉन्ग है, राइट? अभी वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड लॉस फंक्शन. ओके, तो लॉस फंक्शन क्या करता है? आपको अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसी कैलकुलेट कर देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका जो आउटपुट प्रिडिक्ट हुआ है वो कितना रॉन्ग है. बहुत ज़्यादा रॉन्ग आया है क्या, ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंस था एक्चुअल आउटपुट से. तो जो भी हमारे पास लॉस फंक्शन के थ्रू जो भी हमारे को पता चलेगा कि हाँ कितना रॉन्ग है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूरल नेटवर्क रहेगा वो बायस और वेट को थोड़ा बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा एडजस्ट कर देगा. एंड देन एडजस्ट करने के बाद वापस से हम यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? आउटपुट जो भी आया उसको हमने चेक किया लॉस फंक्शन के थ्रू कि वो कितना इनएक्यूरेट है, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने बायस और वेट को एडजस्ट किया. तो यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? दैट्स वाई द नेम बैकवर्ड प्रोपगेशन. ओके, सो हम यहाँ पर बेसिकली प्रिडिक्टेड आउटपुट को कंपेयर किया एक्चुअल आउटपुट से, एंड देन लॉस फंक्शन का यूज़ करके अमाउंट ऑफ इनएक्यूरेसी मालूम करी कि कितना रॉन्ग है आउटपुट, और उसके अकॉर्डिंगली बायस और वेट को एडजस्ट कर दिया. एक बार आपने बायस और वेट को एडजस्ट कर दिया, देन आप पर अगर वापस अब आप वापस से चेक करोगे प्रिडिक्टेड आउटपुट कितना आया. अगर वो रॉन्ग है तो ये प्रोसीजर बार बार होता रहेगा तब तक जब तक हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट सेम नहीं आ जाता एक्चुअल आउटपुट के. तो एक बार ये सेम आ गया, दैट मीन्स आपका मॉडल ट्रेन हो गया. ओके, मॉडल ट्रेन हो गया, इसका मतलब हमारे पास करेक्ट बायस वैल्यू और वेट वैल्यू आ गई. स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था बायस और वेट को. ओके, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता थी, हमने अजम्पशंस लिए थे कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली इतना बायस होगा इतना वेट होगा. यहाँ पर एक बार मॉडल ट्रेन हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि बायस वैल्यू एग्जैक्टली क्या है और वेट वैल्यू क्या है. तो मॉडल ट्रेन होने के बाद बायस और वेट वैल्यू मिल गई, तो अब आप यूजिली अपने मॉडल को यूज़ कर सकते हो टू प्रिडिक्ट न्यू डेटाज आउटपुट. आप कोई भी न्यू डेटा अपने मॉडल को दो, वो आपको एक आउटपुट प्रिडिक्ट करके दे देगा. ओके, सो दैट्स हाउ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन वर्क्स. फॉरवर्ड प्रोपगेशन में वी आर पासिंग इनपुट टू द हिडन लेयर उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है और एक आउटपुट जनरेट कर रहा है प्रिडिक्ट आउटपुट लेयर. ओके, वो आउटपुट अगर करेक्ट है तो ट्रेनिंग हो गई. अगर वो आउटपुट रॉन्ग है तो हम बैकवर्ड प्रोपगेशन करके का यूज़ करके हम क्वांटिफाई करेंगे लॉस फंक्शन का यूज़ करके कि आउटपुट कितना रॉन्ग है. उसके अकॉर्डिंगली बायस और वेट एडजस्ट करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट सेम नहीं आ जाता एक्चुअल आउटपुट के. एक बार वो सेम आ गया दैट मीन्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई. आपको बायस और वेट का वैल्यू पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है, तब आप अपना मॉडल आप रेडी है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो. ओके, सो या दैट्स हाउ बेसिकली डीप लर्निंग वर्क्स, और दैट्स हाउ अ न्यूरल नेटवर्क गेट्स ट्रेन्ड. तो यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज है लाइक टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, कैफे. ओके, सो दीज आर ऑल द लाइब्रेरीज दैट यू कैन यूज फॉर द न्यूरल नेटवर्क. And there is a data set also, a very famous data set, Kaggle. Okay, you can use it for both machine learning and deep learning.
And after that, there are a few points which you should must note. Huge training data. Okay, the amount of training data has to be huge for deep learning. Okay, that's the first requirement. Second, for training a neural network, a normal CPU is not sufficient enough. For that, you need GPU, okay, जो कि obviously costly होता है. और अगर आप GPU नहीं यूज़ कर सकते तो you can use cloud, okay, clouds पे आप machines run कर सकते हो. And the third point here is टाइमिंग. जब हम डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, वी मशीन लर्निंग में, स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग में हमारे पास आवर्स में हो जाती है नॉर्मली ट्रेनिंग, राइट. कभी कभी डेज लग सकते हैं बट नॉर्मली आवर्स में हो जाती है. बट डीप लर्निंग के केस में आपको डेज, वीक्स या तो कभी कभी मंथ्स भी लग जाते हैं. ओके, अगर आप बहुत बड़ा कोई मॉडल बना रहे हो तो आपको मंथ्स एंड मंथ्स भी लग सकते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए. That's the basics of deep learning that you should know if you are learning about artificial intelligence. So it's a very vast field. We will be discussing each and every point in detail in some of the videos, upcoming videos. And yeah, that's it for today. See you later. Take care. Signing off.